welcome back to my channel. I am Bunny Shikha and आज का video is a very different one. It is not like normal videos, fashion videos which I do. So from now on, every Saturday I'm gonna post hashtag chill with Bunny. I'm gonna do a vlog of the day और कैसा जा रहा है और या फिर anything, any BTS of a shoot और लाइक दिस नॉर्मल चिट चैट करने चली जाऊंगी मैं ऐसे ही तो कुछ बातें करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, कुछ व्लॉग्स शेयर करेंगे. सो एवरी सैटरडे आई एम गोना पोस्ट these videos ki 25 things I learned before I turned 25. So when I saw that, I was thinking ki I will make this video once when I will turn 25. And so let's just get started super soon because 25 things share karna hai bahut zyada. Please bear with me till the end of the video because you will know that what are the 25 things that I have learned in this 25 years. I mean, first one is let go. Nothing lasts forever. I mean, like, I know this phase, like everybody says, oh, nothing lasts forever, but I was a person who tried to keep things, long lasting. मैं नहीं कर सकती थी, लाइक लेट गो नहीं कर सकती थी. मैं बहुत टाइम तक मैं लेट गो नहीं कर सकती. कुछ भी चीज़ हो, कोई भी लोग, कुछ भी, मतलब फिर आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑफ एनीथिंग ऑब्वियसली. सो अब अच्छा चीज़ हो, बुरा चीज़ हो, एनीथिंग वेरी गुड, एनीथिंग वेरी बैड, यू कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट. It will come and go as their own time. So you have to let go and you have to accept that nothing lasts forever. Number 2 is me time. So during the lockdown, it helped me so much to understand. I think सब लोगों को ही ये रियलाइज हुआ है कि मी टाइम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड सब लोगों ने वो रियलाइज करके वो एक्शंस भी लिया है एंड दे आर still on continue doing those and appreciating those me time. They have understood themselves. तो जब लॉकडाउन हुआ, जब कुछ भी करने का मतलब कुछ भी नहीं था, बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम पे आई यूज टू डू पेंटिंग्स. आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स बहुत टाइम बाद एंड ट्रस्ट मी, मैंने 100 डेज का 100 पेंटिंग्स कंप्लीट किया था. आई ऑल्सो मेड अ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन दैट ऑल्सो एंड आई पेंटेड अ लॉट ऑफ पिक्चर. मुझे पता नहीं था कि मैं पेंटिंग कर भी सकती हूँ, लाइक सीरियसली. एंड ऐसा नहीं कि मैं खुद से पेंटिंग करती हूँ, मैं लाइक आई एम नॉट अ पिकासो, बट पिनिट्रेस्ट से देख कर आई यूज टू पेंट एंड और स्केच समटाइम्स. सो इट वॉज सो गुड एंड समटाइम्स ऑल्सो आई रीड बुक्स. तो ये मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन्जॉइंग सॉलिट्यूड, लीव लोनलीनेस. आई मीन दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन फॉर मी. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो मतलब अकेले रहना पसंद नहीं करती हूँ एंड आई ऑलवेज लाइक बीइंग विद फ्रेंड्स. टाइम स्पेंड तो कर ही नहीं सकती अपने साथ, या फिर मतलब आई हैव नेवर बीन टू कैफेज और मूवीज अलोन एंड इट वाज सो डिफिकल्ट. बट व्हेन यू ग्रो ओल्ड, लाइक अभी के टाइम पे व्हेन देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर मूविंग आउट फॉर देयर वर्क एंड ऑल, मूविंग आउट ऑफ सिटी. इस टाइम में क्या होता है कि पीपल आर गेटिंग लेसर एंड लेसर इन आवर लाइफ. फ्रेंड्स आर गेटिंग, दे आर friends, but obviously they move out to different cities. There was a point that I understand that there is nobody to go out on cafes or movies with me. Last year initially I started going to shopping alone and usse wo karke mera confidence बढ़ा and then I went to cafes alone and then went to movies alone. So the thing is ऐसे थोड़ा करते मेरे में confidence आया. पहले तो I was so scared कि लोग क्या कहेंगे ऐसे देख रहे कि मैं अकेले कैफे में बैठ के खा रही हूँ, but it is so good. I mean that is what I am telling, that enjoying the solitude, not the lonely. ये loneliness नहीं है कि you are lonely, oh you're going to cafe alone or you're going to pub or movies alone. That is the enjoying your own company, enjoying the solitude. Fourth वाला है taking care of your health. So initially, like when we are in early 20s or teenagers, we are so like खून खोलता है हम लोगों का कि ऐसा ही है कि हम लोग हेल्थ के बारे में नहीं सोचते. ऑलवेज लाइक पार्टिंग, गोइंग हियर एंड देयर, जंक फूड्स खाना, ये खाना, वो खाना, स्लीप, स्लीप डिप्राइव, 4 बजे तक जग के रहो, मूवीज देखो, बिंज वॉच करो एंड लेट से सो, लेट से उठो. सो ऑल आर दीज लाइक होता है अर्ली 20s में, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. यू डू पार्टीज, यू डू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स, यू वांट टू डू, बट ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन योर ओन हेल्थ, you have to take care of your own body. That's why I go to gym.
ताकि स्टैमिना इनटेक रहे, एंड आई ऑल्सो डू योगा ताकि स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहे. सो आई ट्राई टू डू मेडिटेशन समटाइम्स ताकि मेंटल स्पेस भी थोड़ा सा क्लियर एंड इनटॉक्सिक रहे. तो वाला मैं बहुत सालों से ये मेंटेन करती हूँ, दैट डोंट रिग्रेट. ऐसा बहुत सारी सिचुएशन आया कि वहाँ पे मैंने अपना खुद डिसीजन लिया है. मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मत करो, ये करो वो करो, या फिर रिलेटिव्स ने बोला है ये करो वो करो, बट मैंने खुद अपने डिसीजंस लिया है स्कूल से लेकर कॉलेज तक अभी तक. इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो मैंने अपने आप को सिखाया है इन सालों में, कि जो भी करो ठीक है, तुमने खुद का डिसीजन है ऑब्वियसली, एंड मे बी इट डिड नॉट वर्क आउट, बट नेवर एवर रिग्रेट. तो सिक्स्थ वाला है ट्राई आउट मेनी थिंग्स until you find the one. The thing is, I am very much passionate about my creativity, my art, and मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, ये वो, बट ऐसा होता है ना कि वो एक चीज़ जो आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब लगान और प्यार कर बैठो, एंड दैट वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू want to do and you're just giving everything out to be that one particular thing or to do that one particular thing. That one, it's called the ikigai, ऐसा करके कुछ. But I was not finding that one thing until now, that when a few months back when I started doing, when I learned about content creation and influencing and fashion influencer, and I have this keen interest on fashion, अभी मेरे को मिला कि या दिस इज द वन, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, कंटेंट क्रिएशन, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. इसी को लेकर देयर इज अ सेवेंथ पॉइंट, दैट देयर इज नो एज और टाइम लिमिट. लाइक बहुत टाइम से मुझे लगा था, ओ आई एम टर्निंग 23, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू फाइंड माई ओन करिश्मा, आई हैव टू फाइंड माई ओन पैशन, व्हाट आई वांट टू डू. बहुत टाइम तक मुझे ये लग रहा था कि मेरा एज मतलब टाइम जा रहा है, आई एम गेटिंग ओल्डर, turning 22, I'm turning 23, I'm turning 24, oh my god, I have to do it. But I have, calmed myself down and I have realized that it's okay. सबका अपना अपना टाइम होता है, सब कुछ का अपना अपना टाइम होता है. मे बी ये मेरा टाइम नहीं है, मे बी बाद में होगा, मे बी कभी भी होगा. सो यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. जब तुम्हारा टाइम होगा to achieve that or to be there to achieve the goal, you will be there. Number 8 is stop seeking validation. So for a long, I think I remember like long amount of time, years, मैं बहुत ज़्यादा सीख कर रही थी validations from people. बहुत टाइम तक मुझे ये बहुत जगह पे मतलब ये फील हुआ था, and I was going through with this phase of that I am not good enough. I was less focusing on myself, on my work, and I was more focusing on to proving myself to others. Like प्रूव करना है मुझे लोगों को, मुझे वैलिडेशन चाहिए. आई हैव लर्न दैट दिस इज नॉट राइट. यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू शुड फोकस ऑन योर वर्क. अगर किसी को पसंद है, दैट whole person will approach to you. अगर किसी को नहीं पसंद है, they will never approach to you, they will never say good things to you. ये जो मैंने 25 जो भी लिखा है ना, मेरा सारा आंसर सब कुछ मिल गया when I start focusing on myself and only on my work. 9 is accept bad phases and do not escape it. So मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी से सीखा for the last 25 years that बैड फेजेस, बैड टाइम्स आएगा लाइफ में. यू कैन नॉट अवॉइड दैट. बहुत ज़्यादा आएगा, आते ही जाएगा, एंड यू विल नेवर नो कि ये कब ख़त्म होगा, कि क्या होगा. बट द थिंग इज, जो भी खराब सिचुएशंस आ रहा है, अगर इफ़ आई एस्केप दैट phases and if you don't accept it, if you don't go through it, then you will never get over it. हमेशा वो हॉन्ट करेगा, हमेशा वो पीछे ऐसे 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 करके हॉन्ट करके भूत के जैसे आएगा, एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस, इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंड सेट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं हमेशा कोई भी बैड फेज आता था, आई ऑलवेज ट्राई टू फील इट, आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट इट. रोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, वट एवर इट इज़, आई जस्ट go through it, not like escape it, because escape करना is very bad. Number 10 is you are on your own. ये भी मैंने बहुत अर्ली टाइम में ही मैं एक्चुअली समझ गई थी दैट यू आर ऑन योर ओन. बहुत ही ज़्यादा अर्ली टाइम में कि कोई भी मेरा प्रॉब्लम फिक्स नहीं करेगा, एंड दिस इज़ माई प्रॉब्लम. आई शेयर अ लॉट about my problems to my closest friends, but obviously वो लोग भी सजेशन देते ये करो वो करो ये मत करो, बट आई नो वन थिंग दैट दिस इज माई प्रॉब्लम एंड नोबडी गोना फिक्स इट, ओनली मी. सो बहुत टाइम्स आई एम ऑन माई ओन, आई एम बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज व्हाट आई लव. एंड
Yeah. 11th one is the identity crisis, the difficult one for me, and I am glad. I'm so glad that I have overcome this and have learned this in the 25 years that there was a very big phase of my life when I was going through an identity crisis for a long time. I did not know कि मैं क्या करूँ, कौन सा मैं क्या करूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ, but I was not finding like who I am. I was going through that phase that of identity crisis, and I'm glad कि अभी मैं वहाँ से बाहर आ चुकी हूँ. I know what I want to do. I know what are my goals and my purpose and what I want to do with life. 12 things work out on their own way. So मैंने ऐसा बहुत सारे टाइम आए हैं that I tried a lot to things work out in my way कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, इस तरीके से ही चाहिए, यही चाहिए, ऐसे करके मैंने बहुत ट्राई किया है. Life is very mysterious. It plays in a very mysterious way. So that's the thing, that things work out in their own way no matter how much you try to keep it or change it or change in your way. It will turn out in their own way. Number 13 is don't think about the result, just do your work. So ये भी मैंने last year I guess I realized that because I was like very much into the result कि मुझे रिजल्ट चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है. बट देन आई रियलाइज कि ऐसे करने से तो अपना खुद का ही मेंटल पीस डाउन हो रहा है. बट आई रियलाइज दैट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स. Like you are in the cliff, stop thinking about the harness and everything, just jump. Even if you die, does not matter, just jump. So why don't think about the results. I stopped thinking about the results and I just jump. So I just work and do things. Number 14 is very 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 important one, that is body shaming. For a long period of time, like I think like till 2019, I was this very slim, very skinny. All my college life, all my school life, I was very slim. I was very skinny. It's not that I had any kind of problem with me being that skinny, but obviously people around me, you know that body shaming, very famous. So people around me had a lot of problems with that, and I for a long amount of time, even in my own house, like all my relatives and all, everybody is like तुम कितनी पतली हो, तुम कितनी पतली हो, खाते नहीं हो क्या, उड़ जाओगे, ये वो. Like there were so comments and non-stop. There was a time I was very frustrated because every one person or the other talking about my body shaming, like how skinny I am and how did I even get my dresses fit. So after that, when I joined gym, and that was the only thing that helped me to gain weight and to be in a proper, but that, and I don't know how I got this mindset, but I had this mindset that I'm so skinny, I'm not looking good and I'm not looking great, and I should join gym to look good and to look better, to be accepted in the society. But what happened when I, after a year or so, when I started gym, I just realized that I love gym, I love workout. It does not matter how I look or how my body looks or how, if even if I'm skinny or fat, it does not matter. I am good in myself. I feel good in myself, and I feel good when I work out. That is the main important thing. And that is when I realize that these body shaming are so meaningless. And I mean, it does not really matter, even if you're skinny, even if you're fat, even if you are, just normal. What matters is, if are you healthy, are you stable, are you healthy, are you fit? That is what matters. So when I started feeling that yes, I have to work on myself to feel healthy and fit, my mindset changed. I was not at all thinking about, oh, I have to get fat, I have to gain weight a little bit to get out of this skinny thing, and so that people will cherish me and whatever the thing is. But yeah, there are people who cherish me and give compliments. Oh, you have changed a lot. But these are the people who used to body shame me. So kudos. God bless to you. Number 15 is don't hyper react. So the thing is, I am kind of like a short tempered, and I was very short tempered. But this thing is
a process. It is still going on. I have learned that I do not have to be so hyper react on and on everything and all, but it is an ongoing process, I must tell you. But because still I am working on that. Maximum of the time I stay silent, because I think being silent is the best thing you can do to avoid a lot of unnecessary arguments and debates. So it just help your mental peace, it just help you. So that is what I learned. Number 16 is work hard, don't sit on your luck. So you never know, I have talked about this earlier also, but you never know what will work for you and when it will work for you. So never ever sit on your luck and yeah, something will happen. Never do that. I know that my luck is very bad. I don't know why, but my luck is very bad. It never goes in my way. My luck never goes in my way. So I always believe on the hard work. Like, work hard, that's it, nothing. Just sleep, eat, work hard. That is my mantra. Number 17 is self love. So that previously I talked about solitude and being and leave the loneliness and enjoy your own company. So this is also one of that I have learned in the past few months, I guess, that how important it is to love yourself and to feel that self love, that you should be complete with yourself, you should be happy with yourself. And when you are happy with yourself, when you are complete with yourself, when you are with somebody, or be it friends or anybody, you, that person also feel that positivity from you. I think the toxicity between friends or anything that comes up when one or the other person are not complete or do not self love them. So that it is very important to maintain any kind of friendship or any kind of relationship, or any kind of you're meeting people or anything for the first time for work or any purpose. Self love is very important, because there are so many people who are bound to pull you down or say negative things. When you are in self love, when you enjoy yourself, when you are so complete with yourself, these things does not matter, these things will not affect you that much. So that is what I have learned, and I think this is the best thing that I have learned in the last 25 years. Number 18 is people are the part of your life. So it was like letting go of the thing which I talked about in the first point. It was very difficult for me, but you have to understand that people will go when their time will come. So nothing, it was like nothing lasts forever वाला thing, वैसे ही कि बहुत टाइम तक मैंने सोचा है कि people क्या, you know, even if you have pet or something like that you love so much, they will also have to go when the time comes. So एक तो डेथ होता है जिसके वजह से पीपल हैव टू गो, और पीपल यू लिविंग थिंग्स यू लव दैट हैव टू गो, और दूसरा कुछ भी रीजंस हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग लास्ट फॉर, ये सारे फेजेस होते हैं, दे आर जस्ट अ पार्ट. लाइक मैंने ये सोचा है कि ये मेरा लाइफ है, दिस इज द बुक ऑफ माई लाइफ एंड आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ इट, एंड ऑल दीज पीपल आर जस्ट चैप्टर्स और फेजेस. सो अभी ये लोग हैं, कुछ शायद लास्ट तक रहेंगे, कुछ शायद नहीं रहेंगे. तो जब इसका फेज और चैप्टर खत्म हो जाएगा, सो दिस पर्सन विल ऑल्सो गो. सो दैट आई हैव लर्नड, एंड honestly speaking it is very difficult to accept this, कि people will go when their time will come and they are not a part of your, they are just a part of your life and all these things. Because I am so people loving person. मुझे बहुत पसंद है friends and everything, सबके साथ रहना. But it is a very hard thing to learn, but I think it has made me very strong as a person. Number 19 is self-confidence. So there are, in the work or whenever, like I am into fashion and I love dresses, and there's so many dresses which are sometimes very bold and everything. So people sometimes I used to ask like, oh, how come you wear all these things, or this is not good, or do you even feel comfortable? So being confidence is the main thing that also I talk about in the fashion videos, in the vlogs, that if you are confident with yourself, if you're, it will reflect in your work, it will reflect in your dresses, it will reflect in your personality. If you are confident, इट डज नॉट मैटर कि अगर आपने कुछ भी काम किया है तो लोग आके कुछ भी बोल रहे हैं कि ये कैसा काम है, ये क्या है, वो क्या है, वो तो लोग बोलेंगे. बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंस देन इट विल नेवर मैटर टू यू, यू विल स्टिल कीप ऑन डूइंग दैट. सो एक टाइम पे था दैट आई हैड दिस लो कॉन्फिडेंस वाला थिंग कि मुझे मैटर करता था. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज ऑल्सो सीकिंग वैलिडेशन
from people. So I was not focusing more on my work, on myself, and I was focusing on people opinion on me. So उस टाइम पे आई वॉज वेरी मच लेस कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ कि इसलिए इट वॉज वेरी मच अफेक्ट कुछ भी बैड और नेगेटिव कमेंट्स और कुछ भी ओपिनियंस हो दैट पीपल यूज टू थ्रो ऑन मी कि ये मत करो, वो कैसा लग रहा है, ये इट यूज टू अफेक्ट मी वेरी बैडली एंड मेरा मेंटल स्पेस तो खराब ही होता था एंड इट वॉज सो बैड दैट. But eventually I learned and I realized that self confidence is so important, and then my work, even my personality, my looks, everything changed. Number 20 is self independence. So this is a very very important thing. I was very much struggling with uh, getting people for my work. Obviously जो भी मैं videos करती हूँ and everything, I do all the edit and shoot, but there was a time that I was very much struggling. I was so dependent on people कि मैं अगर ये करूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसके ऊपर ज़रूरत पड़ेगा. I need a videographer, maybe I need an editor. How am I supposed to edit and do everything and all dependent? But for the few months I would say that I have learned कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मे बी यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी यू डोंट हैव स्किल्स एंड एवरीथिंग, बट इफ़ यू हैव दैट इफ़ यू हैव दैट जील इन यू कि मुझे ये करना है, मुझे अभी तो कोई नहीं है, मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मेरे को ही करना है, तो सब कुछ हो जाता है. सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड बिफोर कि कैसे मैं करूँ, एंड सो डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड मेरा काम भी कुछ भी नहीं हो रहा था. इट वॉज नॉट ग्रोइंग. बट वेन आई बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ कि मैं खुद पे ही कर रही हूँ सब कुछ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके खुद कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई मीन maybe it is very exhausting sometimes, it is very overwhelming sometimes, but it is the best thing because मज़ा आता है सब कुछ करना. सो लास्ट 5 बचा है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना टाइम तक टिके रहे वीडियो में मेरे साथ, मेरे बक सुन रहे हो एंड मेरे 25 लेसन सुन रहे हो कि what I have learned. Last 5 are the best ones that I've kept in the एकदम लास्ट में. Number 21 is do not give up. I mean like oh my god, ये मैं मतलब बहुत सालों से इतना मानती हूँ कि do not give up. Even I have a tattoo which is say rise above, which is also implements that not to give up. कि कुछ भी सिचुएशन हो, राइज अबव लाइक कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी कितना भी खराब सिचुएशन हो, I always tell myself rise above कि you can do this and you can rise above from this situation, from the circumstances and from this phase, and you will do good. So do not give up is very much helpful for me. जब भी मैं बहुत ज़्यादा लो और डाउन सिचुएशन में होता है, मैं हमेशा I have never give up कि नहीं होगा मुझसे, नहीं कर पा रही हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया. मैंने बहुत ट्राई किया, टिल एंड तक ट्राई किया, नहीं वर्कआउट किया, तब मैंने कुछ और चेंजेस किया या फिर ये किया वो किया, बट आई हैव नेवर गिव अप. 22 इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट दैट कटिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ. सो देर वॉज अ लॉन्ग टाइम कि बिकॉज आई वॉज सो पीपल अटैच्ड विथ पीपल एंड सो मच people loving person that in my college lives, in my high school time and in college lives, there were friends that I was not able to cut them off. For a long time I would say कि मुझे problem होता था to understand, yeah, this is the toxic person, I have to get out. Maybe I used to understand कि yeah, this is a toxic person and this person with whom I am interacting or is my friends is not good, is toxic, and it is eating up my mental space. And but I was not able to cut that person off because every day went by, it was so eating up my confidence and so bad. So it was very bad. So it is so important to understand that yeah, these are the toxic people and now you have to cut it. Understanding फिर भी easy part होता है कि okay, समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के साथ मैं मिलजुल रही हूँ कि ये लोग टॉक्सिक है, ठीक है, बट कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, बट मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था कि अरे यार क्या सोचेगा, या फिर ठीक है मैं बोल देती हूँ या फिर चली जाती हूँ उन लोगों के साथ, थोड़ा ऐसे अलग अलग ही मिलेंगे फिर भी बात कर लेती हूँ, ऐसा ऐसा फीलिंग होता था. बट आई अंडरस्टैंड कि नहीं,
they are toxic people, you have to cut them off. 23 is enjoy the moment. So I have learned that, of course, जब मैंने ये समझ में आया कि to enjoy the solitude part and also being alone is not that bad. So I understand that sometimes being friends with your with people, you have to enjoy the moment, because you never know what will happen tomorrow. Maybe tomorrow there will be nobody, you will be all alone again with yourself. So when you are with people, then you should enjoy that moment, forget about everything. Because ऐसा टाइम था बहुत पहले कि इवन इफ आई एम विद पीपल एंड एंजॉइंग, आई यूज्ड टू फील वेरी अफ्रेड कि मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, कल अगर कुछ नहीं कर पाऊँ तो एंजॉय, अगर ये फ्रेंड्स नहीं रहे तो क्या होगा. सो ऐसा फीलिंग्स आता था बहुत पहले, बहुत साल पहले. सो आई हैव लर्न कि छोड़ो, वैसे भी लोग डज नॉट स्टेज फॉर एवर, यू नेवर नो वट विल हैपन टुमारो. सो जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय. एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टिंग फेलियर्स. सो जैसे मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, ये वो ऑब्वियसली उन सारे में बहुत कुछ फेलियर्स भी हुआ है, एंड आई एम लिटरली नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. एंड जो मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, जो मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, even if this does not work out, and it will not, I will feel bad maybe, but it will not affect me that much because I am not afraid. And what I said earlier, that I never gave up. So तब भी मैं give up नहीं करूँगी, तब भी मैं शायद कुछ और कोशिश करूँगी करने में. So that is the thing, that because I never give up, that's why I'm never afraid or feel bad about failures. I obviously human nature थोड़ा बहुत feeling bad होता है if there is a failure sometimes, but I accept those failures and I move on to the next one, like not to give up. 25 things I've learned before I 25. Last 25 is never stop doing what you love. So this is also very much close and important to me, and I have learned this क्योंकि मैं कभी भी नहीं रोकूंगी अपने आप को सारी चीज़ें करने से जो मुझे करना है. Like there are a lot of things that I want to do. I firmly believe, and I have learned this, and also I firmly believe if you want to do something, it is possible, it is not impossible. And also you have that zeal that yes, you can do this. And ये भी मैं बिलीव करती हूँ कि whatever you want to do in this life, you can achieve that, you can do that, you can try that. होगा नहीं होगा वो तो डेस्टिनी या फिर लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, बट यू कैन ट्राई दैट, एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा. आई नेवर स्टॉप्ड doing what I love to do, and I will keep on doing that. That is what I learned. That's it. That's the end of my video. Oh my god, मैंने बहुत ज़्यादा बग लिया. Subscribe to my channel. Much love to all of you. I have also shot a short vlog, and that is my first vlog also, which I will post maybe like next Saturday. So you will see that. I will meet you guys there. Until then, stay safe, stay happy, stay whatever.